हाँ, मुझे सब पता है, मुझे मत सिखा। यस, वी ऑल नो दैट ऑफिस कलीग और अ फ्रेंड और अ रिलेटिव हु थिंक्स ही नोज एवरीथिंग, पर आता कुछ नहीं है। हम सब भी कभी ना कभी ये बोलते ही हैं कि हमें सब पता है, हमें मत सिखा। बट इज इट रियली ट्रू? कैन वी ह्यूमंस रियली नो एवरीथिंग? लेट्स टॉक अबाउट इट। I know you guys are curious to know the answer to that question. However, deep down we know the answer. It is not possible to know everything, right? But still, let's dive into this. We will at least get some logic behind this. Everything means सब कुछ पता। मैथ्स के हर कैलकुलेशन, सारे फॉर्मूलाज, दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सभी के नाम, हर प्रजाति का नाम, पेड़, पौधे, पास्ट, प्रेजेंट, सब कुछ। And the most important to know what's going to happen in future. Yeah, I know that's exciting but also scary. So when this question came into my mind, the first thing I did, obviously I googled it. I tried to search some facts about it. Is there any human being alive or dead was close enough to know everything? I knew Albert Einstein, the genius, of course, didn't know everything. Well, when you first google it, the first thing that pops up is that the omniscient is the one who knows everything. Omniscient is not any human's name, it is the word devoted to the creature who knows everything. Well, if we find the presence of someone who knows everything, future, past, present, what is right, what is wrong, that creature will be God itself, right? But still, is it possible? Can someone dedicate 24 hours into learning something every day and will able to know everything? सी एक सिंपल सी प्रोसेस है, इसको समझो। द वे वी कंज्यूम नॉलेज इन दिस वर्ल्ड, इट्स बाय एक्सपेरिमेंटिंग विच इज़ डन बाय समवन एल्स एंड समटाइम्स वी लर्न थ्रू समवन्स पर्सपेक्टिव। मतलब अभी तक हमें जो भी पता है वो या तो हमने देखा है, पढ़ा है, सीखा है, या किसी ने ऑलरेडी जीवन में एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया हुआ है कि अगर आप ये पर्टिकुलर चीज़ करोगे तो आपको ये पर्टिकुलर आउटकम या रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टच अ लाइव वायर यू विल गेट अ शॉक, राइट? क्योंकि किसी ने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है या खुद आपने भी टेस्ट किया हुआ है। वेल, द नॉलेज पासेस ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशंस। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज ऑफ्टन बेस्ड ऑन पर्सन्स इंटरेस्ट और द डिमांड ऑफ नोइंग सर्टेन थिंग्स टू ओवरकम लाइफ चैलेंजेस। वी डेवलप स्किल्स टू डू आवर डेली वर्क, टू अर्न इनकम, टू परस्यू आवर इंटरेस्ट. Sometimes we are eager to know something, we might search it on Google and try to know a little bit about it, but we try to master it. Obviously, a person might know everything about a specific field, a project, or a specific topic. But the moment when you think that you know everything about a specific subject, there is a new research going on for improving that subject. पर चलो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ होता भी है, फिर भी knowing everything means you know the outcome too. That's it. You will never be going to try doing that thing. सपोज आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली अब आप वो मैच देखोगे ही नहीं, या अगर देखोगे भी तो भले वो मैच कितना ही एक्साइटिंग, टेंस या नेल बाइटिंग हो, आपको वो चीज़ कभी फील ही नहीं होगी, ना ही आपको मज़ा आएगा। सी, द यूनिवर्स इज़ वास्ट, रियली वास्ट, एंड फिल्ड विद इटर्निटी ऑफ इंफॉर्मेशन. एज दिस वर्ल्ड इवॉल्व्स एवरी डे, दुनिया में रोज़ कुछ ना कुछ नया डिस्कवर हो रहा है, नए प्लैनेट्स, नई स्पीशीज़ और भी ढेर सारी नई नई इन्फॉर्मेशंस. आपने मार्वल और डीसी की मूवीज़ तो देखी होगी. मार्वल और डीसी की मूवीज़ हमें फ्यूचर की दुनिया दिखाती है. एंड इफ़ यू बिंज वॉच एवरी मार्वल मूवी, यू मस्ट हैव नोन द फेमस जारविस. जारविस इज़ अ फिक्शनल एआई लाइक सीरी, गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा. मूवी में हमने देखा कि वो कैसे ढेर सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन सेकंड्स में दे देता है. अगर अभी हमें किसी चीज़ के बारे में पता करना हो या जानना हो तो हम गूगल कर सकते हैं, पर फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शायद गूगल पर नहीं मिल सकती. द फ्यूचर विल स्टिल बी अननोन अनलेस समथिंग लाइक टाइम ट्रेवल कैन बी डिस्कवर्ड. वी माइट गेट एडवांस्ड विथ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टिल getting all the knowledge is not possible. Like if we had access to all knowledge, it would be a tremendous resource and could potentially allow us to solve many problems and answer many questions. We would likely be able to understand and learn new things very quickly. But having access to all the knowledge does not guarantee success or happiness. Still,
We have to make an effort to get to that knowledge. But with great knowledge comes great power, and it would be on us to use that knowledge for the greater good and be able to face the potential consequences of any of our actions. Knowledge and power goes hand in hand. Someone with all the knowledge in the world can misuse it or may also make this world a better place. Well, if we know everything, then what's the purpose of life? There is a saying by Socrates: true knowledge exists in knowing that you know nothing. A human mind has its limitations, and the human body has its purpose to think, make connections, and send signals to other parts of the body. Yet something magical happens in this mind. We know exactly how our body functions. We have the curiosity to understand why this happened and what makes it happen. This separates us from animals that only value hunger. Their mind does not find a reason to many things they do daily, as this curiosity of knowing everything leads us to progress and innovation. In Christianity, they say that God chooses the limit of omniscience to preserve free will and dignity. In Hinduism, God Vishnu is attributed with many qualities, one such being omniscience, the one who knows everything. In Islam, a Muslim must believe that God knows everything. In Jainism, omniscience is considered as the highest type of perception. Curiosity makes us who we are. The hunger of knowing something makes this life interesting. Knowing something separates us from animals, and not knowing everything makes us human.